Dear students, now we will study heat capacity of solids. Before we start discussion about heat capacity of solid, we first know what is heat capacity. We have studied this term in thermodynamics. You already have studied in chemistry in chapter of thermodynamics what is heat capacity. In briefly, I am telling you about the heat capacity. 1 second, getting my pen. Heat capacity may be defined as C equal to dQ upon dt. It can be defined as amount of heat required to raise the temperature through 1 degree centigrade is called heat capacity. Heat amount of heat required to raise the temperature of a substance, of a solid, anything, solid, liquid or gas, of a substance by 1 degree centigrade is known as heat capacity. It is categorized into two groups. One is Cp, heat capacity at constant pressure, and another is Cv, that is heat capacity at constant volume. Now proceed. According to classical mechanics, the heat capacity of all monoatomic solids. Monoatomic solid means that solid which is made up of single atom, like only iron atom, silver atom, diamond, silver atom not monatomic, diamond only one atom, and silver type atom, diamond which is form of carbon, etc. इसमें एक ही टाइप के एटम हो, मतलब अगर सिल्वर का एटम जैसे प्योर गोल्ड होगा तो उसमें केवल कौन से होंगे, एक ही एटम होंगे, किसके, गोल्ड के. दैट आई मीन टू से. Should be cannot all monoatomic solids should be constant and equal to 3. तो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर यह बताया गया कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक सॉलिड्स, सभी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स का जो हीट कैपेसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है और ये इक्वल किसके होता है, 3R के. ये ड्यूलॉन्ग पेटिट्स का था, उन्होंने ये बताया. हाउएवर, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली सही नहीं पाया गया. इट हैज़ बीन फाउंड ट्रू ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. एट लो टेम्परेचर this value is found to be less than this 3R value, and as temperature decreases, as T tends to 0, the variation of heat capacity with temperature of few element, ये फिगर में शोन किया गया है. और ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स अप्रोचेस टू 0 एज T टेंड्स टू 0. जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जा रहा था ये वैल्यू घटता जा रहा था, एंड
at absolute zero temperature it also becomes zero, it tends to zero. यहाँ फिगर 1 में कुछ हीट कैपेसिटी कुछ मोनो एटॉमिक सॉलिड की दी गई है। यहाँ कार्बन, डायमंड, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये क्या हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। दैट हैज बीन हियर मेंशन्ड इन डुलोंग-पेटिट्स लॉ, द हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो शुड बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3R। टेम्परेचर जैसे बढ़ाया जा रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट बिकम्स कांस्टेंट। और यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर घटाया जा रहा है, ये हाई टेम्परेचर के लिए ये लॉ एप्लीकेबल था, ये फॉलो कर रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाया जा रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो, दिस हीट कैपेसिटी आल्सो टेंड्स टू जीरो। हाँ, आइंस्टीन, हाँ, here one term CV comes. What is CV? I will discuss this further. But here only you know कि CV is the heat capacity at constant value. Einstein in 1905 explained this variation of heat capacity of solid with temperature by using Planck quantum theory. Explanation: a monoatomic solid can be considered as a collection of oscillators with 3 vibrational degree of freedom. It means कोई भी मोनोएटॉमिक सॉलिड है, सपोज दिस इज कॉपर प्लेट, here billion of copper atoms from which this copper plate is made up of, जिससे कॉपर प्लेट बना हुआ है, और each atom can pass 3 vibrational degree of freedom. You know degree of freedom, there are 3 type of degree of freedom: rotational, translational, first translational, then rotational, translational, and third vibrational degree of freedom. But in solid, for a single monoatoms, rotational and translational motion is not possible. Only vibration, because in solid state that atom only vibrate from their equilibrium position, so rotational and translational motion will be not possible in this monoatomic solid. Only vibrational degree of freedom occur, and the motion which atom can perform vibrate is along the 3 axes, either along x axis, either along y axis, or either along z axis. So there will be 3 vibrational degree of freedom. According to law of equipartition, here I have written spelling wrong in our notes which I have provided you all, so please make correction. Equipartition: according to law of equipartition of energy, each oscillator, here each atom is behaving as oscillator because upon absorption of radiation each atom vibrate, oscillate, so it behave as oscillator. So we are naming here it oscillator. Collection of oscillator with 3 vibrational degree of freedom. According to law of equipartition of energy, each oscillator of such a solid possesses as average energy equal to 3 kT.
any solid along any direction, it possesses kT amount of energy. Since it vibrates along 3 direction, so there will be total energy possessed by solid atom, non-atomic solid, will be equal to kT along x-axis, kT along y-axis, kT along z-axis. So total 3 kT. So total energy will be equal to 3 kT, where K is Boltzmann constant and T is absolute temperature. Now, for 1 mole of oscillator, 1 mole of atoms, that energy will be called molar energy, because it is now calculating for 1 mole of oscillator. So total energy equal to Na, which is Avogadro number, into 3 kT, which is this value, and it can be further written as 3 into Na kT, since we know that Boltzmann constant K equal to R by N. So here so here we can write R equal to Kn. R equal to Kn. Now this can be written as equal to 3 Na k t, और Na k अभी इसके पहले हमने देखा कि k R is equal to n into k. So in place of we write R, so that's equal to 3RT. As total energy comes 3RT. Now we know that heat capacity at constant volume equal to del E upon del T at constant V. ये थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है, ये आप लोग पढ़े होंगे, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन पार्ट 2, BSc पार्ट 2. हाँ, बट here I am just reminding you how it comes. We know that from first law of thermodynamics, dq is equal to d plus p dv. At constant volume, this equation, first law of thermodynamics, takes the form dq at constant volume is equal to d at constant volume plus this term dv equal to 0 at constant volume. Dv equal to 0. So this whole term becomes 0, and dq at constant value is equal to d. So Cv, which is equal to del q upon del t at constant v, may be written as equal to del E upon del t at constant v. In place of dq, we use d from this relation. So here we use this relation here
E value are we have find in previous phase equal to 3RT. Differentiating with respect to t equal to 3RT. So del E upon del T at constant V equal to 3R del T upon del T at constant V. This cancel equal to 3R. That's it. Is the finding. Or 3 we may write 3V equal to 3R. This is the Dulong-Pettit law here, which had been mentioned earlier. But this result is observed only at high temperature. Now, employing Planck quantum theory, Einstein suggested that oscillators, that is, atoms do not vibrate with same frequency but may have an integral multiple of some minimum value. उन्होंने बताया कि सारे एटम्स जो हमारा now Planck employing using Planck quantum theory, Einstein suggested that all oscillators do not vibrate with same frequency. मतलब सारे जो ऑसिलेटर हैं उस हमारे सिस्टम के, वो सारे एक ही एनर्जी से वाइब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी मिनिमम वैल्यू, एनर्जी वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल से वाइब्रेट करते हैं. एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज h nu, and any oscillator will be value equal to n h nu, where n may be 1, 2, 3, 4, any integer. By applying Planck equation, average energy of oscillator is given by, हम लोग इसके पहले डिराइव कर चुके हैं, E बार एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते समय E बार इक्वल टू h nu 0 अपॉन e पावर h nu अपॉन kt minus 1. Now molar energy of solid is given by E equal to, since molar energy is calculating, so we multiply here by Avogadro number into 3 into E. 3 has been taken because of for 3 dimension, 3 degree of freedom, 3 vibrational degree of freedom, and E is the average energy along one direction. That becomes 3Na h nu 0 upon e power h nu 0 upon kt minus 1. Now we know that Cv is equal to del E upon del T. We have discussed earlier. From here, E value is this. Now differentiating E with respect to T at constant volume. Here, small differential calculus come into picture. Here Cv is equal to del E upon del T at constant V, and E is find, average energy is find 3 Na h nu 0 upon e power h nu upon kt minus 1. Now differentiation start. Del E upon del T at constant V. Differentiating here 3 Na h nu 0 is constant, so is taken out of this derivative term, and del upon del T, this term's denominator comes in the above at h power minus 1. And now applying formula d by dx x पावर n, जो कि मैथ में पढ़े हैं, आप लोग भी जानते होंगे. इसका क्या डिफरेंशियल होता है,
एन एक्स पावर एन माइनस वन। वही हम लोग अप्लाई करते हैं हेयर एन माइनस वन, दिस टर्म इज एक्स, सो एक्स एन माइनस वन माइनस वन, इसलिए पावर माइनस टू हो गया, ये हो गया। और दूसरा एक फार्मूला और डिफरेंशियल है ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, सो उसका डिफरेंशियल भी हो जाएगा। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई पावर एक्स। सो स्टिल दिस टर्म, ये भी टर्म ये छूटा हुआ था, इसलिए इसका डेल बाई डेल टी ई पावर एच न्यू जीरो अपान के टी माइनस वन। अगेन इन नेक्स्ट स्टेप all these constant term write in similar fashion as in previous step, as in above step. E power h nu, e power x differential is e power x, so it become e power x. Now x, there is a t term, so we differential, since differential is with respect to t, so h nu this term will undergo differentiation h nu 0 upon kt. Now 3na h nu 0 minus 1, this term go in denominator, e power h nu upon kt into h nu upon k is constant and which is variable is 1 upon t, and 1 upon t may be written as t power minus 1 del upon del t t power minus 1. 3na h nu 0 माइनस वन इंटू ई पावर एच न्यू अपॉन के टी। हाँ, ये सिमिलर फैशन में लिखा गया है, जो ऊपर है केवल जहाँ चेंज है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, टी पावर माइनस टू। हेयर ये सिमिलर फार्मूला इज अप्लाइंग एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे क्या था माइनस वन डी बाई डी टी टी पावर माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन फार्मूला लगाएंगे, ये n है एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस वन टी और माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस वन टू माइनस वन टी पावर माइनस टू, यही सेम थिंग यहाँ पे लिखा गया है। हाँ, इसको हम फिर और कैसे लिख सकते हैं, 3na एच न्यू 0 एच न्यू 0, ये के टी स्क्वायर यहाँ से था, इसको यहाँ ला देते हैं, कांस्टेंट है, ई पावर एच न्यू 0 अपान के टी इंटू ई पावर एच न्यू 0 अपान के टी माइनस वन होल स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू 3na के एच न्यू 0 अपान के टी होल स्क्वायर हेयर एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लीजिए, एच न्यू 0 टू टाइम्स है, इसलिए एच न्यू 0 होल स्क्वायर कर दिए, के टी स्क्वायर है, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइंग बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब इसको कर दिए तो ऊपर नीचे क्या हो गया, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू 0 3na टू के एच न्यू 0 अपान नीचे किए हैं के टी ओवरऑल होल स्क्वायर, दैट इज सेम थिंग हैज बीन रिटन हियर एंड दिस इज, अपन इसको नीचे हम सेम टू सेम उतार लेते हैं यहाँ पे, तो दिस बिकम्स इक्वेशन 3। हाँ, this is the final derivation of del E upon del T at constant V, and now we use this equation 3. हाँ, CV equal to del E upon del T at constant V,
and this 3NAK H nu 0 upon KT. This thing, equation 3 has been written once again here. Now two cases arise when temperature is very low and when temperature is very high. At very low temperature, what happen? H nu 0 upon KT will be very high than 1, because if T will be less, then this whole term, since T is present in denominator, then H nu 0 upon KT will be high, very high, and its exponential will be still very high. The equation 3 now becomes Cv equal to 3NAK H nu 0 upon KT into, यहाँ पे जब ये बहुत हाई हो गया तो हम 1 को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, e पावर एच न्यू अपान के टी, ई पावर एच न्यू अपान के टी, दिस कैंसिल, ये जो माइनस हो गया ये कैंसिल पावर 1 एंड आई एम रिटन हेयर this thing what I want to say, e power h nu 0 upon kt and upon e power h nu 0 upon kt, and 1 को छोड़ दिए क्योंकि e power h nu upon kt is very greater than 1, that's why we are leaving 1 in comparison to this very high value, and this whole square, this cancel 1 power, and now it become e power h nu 0 upon kt, and it can be written as this denominator comes in numerator, it becomes h nu 0 upon kt power minus 1. हाँ, और e पावर माइनस h nu 0 upon e power minus h nu 0 upon kt. That thing is written here. This is equation 4. Here what we concluded, on decreasing the temperature, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, the exponential factor decreases much more rapidly than corresponding increase in the factor h nu 0 upon kt square. यहाँ कहने क्या मतलब है कि जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है. यहाँ पे ये फैक्टर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये फैक्टर बढ़ेगा. दिस फैक्टर is increasing, but here exponential is with negative sign, that's why with decreasing temperature this will be decreased very rapidly. So here जो डिक्रीज एक्सपोनेंशियल फैक्टर में है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन this h nu 0 upon kt factor. That's why the value of heat capacity at constant volume overall decreases with decrease in temperature. Is it clear? अगर आप लोग न समझ में आए तो फिर से मुझे पूछ लीजिएगा. केस 2, सेकेंड केस क्या है? एट हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर h nu 0 upon kt, क्योंकि जब t डिनोमिनेटर में है t बहुत हाई होगा, ओवरऑल एच न्यू अपान के टी की वैल्यू घटेगी और ये क्या हो जाएगा, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी लेस देन 1. उस केस में क्या होगा, वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे. हम जानते हैं, वी नो ई पावर एक्स इक्वल टू 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3. This sign is factorial. Factorial is also written by this sign, like factorial 2, factorial 2, factorial 3. But this is also factorial 2, factorial 3. Both things are same. Equation 3 now reduces to 3
this equation 3 NaK HNO0 upon KT into, here we expanding e power in similar to e power x. Here x is HNO0 upon KT. Now 1 plus x square upon factorial 2. In place of x we put this value, and similarly in denominator 1 plus x and so on. Here this one cancel out, -1 is already present. Here this term has been written wrong. Here will be no power. This power will be outside this ब्रैकेट. तो यहाँ पे ये सिमिलर फैशन में हुआ. ऐसे ऊपर का हमने एक्सपेंशन किया, वैसे नीचे का भी किया. चूँकि ये वैल्यू बहुत कम है, very smaller than 1, so higher term can be neglected. HNO0 upon KT with power more than or equal to 2 will be omitted. So our expression becomes CV equal to 3 NaK HNO0 upon KT square. Now what happened from here? We multiplying this HNO upon KT in whole term of numerator. So what thing happened here? Just HNO0 upon KT square, when multiplying by in 1, it becomes HNO0 upon KT whole square plus this term multiplied into this term, so it becomes HNO0 upon KT whole cube. We got power 2, here power 1, both power will be added, and we get power 3, because by formula a power m into a power n, if their base is same, their power is added. This become a power m plus n. Sorry, a power m into a power n. This becomes a power m plus n. Same thing is used here. Now, and denominator HNO0 upon KT we left here one more thing. हम यहाँ पे एक स्टेप जल्दी कर दिए, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग. 1 plus x square upon factorial 2 सेकंड टर्म था. दिस इज HNO0 upon KT. फ्रॉम हेयर HNO e power x e power then HNO upon KT plus HNO0 upon KT upon factorial 2 and so on -1 plus 1 cancel out each other. That term has been written HNO0 upon KT plus HNO0 upon KT factorial 2. Factorial 2 can be written as 2 because factorial 2 is equal to 2 into factorial 2 can be written as 2 into 1. That will become 2. So in place of factorial 2 we can write 2. So that's why written here 2. So the shape of equation becomes at very high temperature. Here we are leaving that same thing has been written here, which I have earlier told you. At very high temperature, HNO0 upon KT is very low. Hence the term with 2 or more
then 2 can be neglected, so above equation becomes CV equal to 3NAK, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म क्या है, 2 या उससे अधिक हैं. एस न्यू 0 अपान के टी पावर 2, एस न्यू 0 अपान के टी पावर 2, एस न्यू 0 अपान के टी पावर 3. हेयर ये होल पावर है, तो यहाँ पे एस न्यू 0 अपान के टी इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस न्यू 0 अपान के टी पावर 2, एस न्यू 0 के टी पावर 4 एंड समथिंग more, so all the term will be neglected. So overall what we get CV equal to 3NAK. Only these things, that same thing has been written here. And since we know that K equal to R by N, so in place of K we read CV equal to 3NAK, K equal to R by NA cancel, so we get CV equal to 3R. That is the value we get from classical mechanics, Dulong-Petit's law, that is applicable only at very high temperature. So at very high temperature the heat capacity value comes 3R, which support classical mechanics. Here that value in initial page, just I remind you, this value 3R, which initially predicted by Dulong-Petit's law. That's all about heat capacity of solid. Thank you.